Hello everyone, good morning. So welcome to another session of UPSC CSAT free classes for 2023. So guys, till now what we have studied percentage and we are studying profit and loss these days, right? So today we are going to discuss unitary method in profit and loss, and guys we have already discussed unitary method in percentage, fine. So आप वो वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, right? So percentage unitary method you just watch, and after that आप profit and loss के जो बाकी के videos हैं you just also watch those videos also, right? And let's start with today's class. So guys, before starting today's class, let me give you a brief idea of unitary method. So guys, in unitary method the question will give you some value. You just have to assume a perfect value from your end, and in percentage the most convenient value is what? The most convenient value is 100%, fine. So you just assume the value as 100% somehow and just follow all the instructions of the questions, fine. And ultimately you will get one value of your, and question is giving you one value, right? So you just have to compare both the values, that's it, fine. So this is the normal procedure of solving the questions of unitary method, fine everyone. So let's start today's class, and before starting today's class let me introduce my Telegram channel. So our Telegram channel is telegram/UNGIST, fine, you may check it out. This is our website ungist.com, fine. And guys, we are also running a CSAT foundation program. It is online and offline in both the modes. It is hybrid modes is there, fine. So you can join that program also. Crash course is there, test series is also there. So many things are there for you, right? Yes. So guys, let's start today's class. So everyone, just read this question. Just read this question once and try to comprehend the question, right? Just read the question. The question is saying a man sold an article at a loss of 20%. Okay, a man sold an article at a loss of 20%. If he has sold that article for ₹12 more, he would have gained 10%. Find the cost price of the article, right? A man sold an article at 20% loss. So all of you just think about it. They are asking about the CP of the article, right? So CP we need to find. And a man sold an article at 20% loss. So in first case the article was sold at 80% of the CP, right? 20% loss means what? It is 80% of the CP. Okay. And in second condition there would have been a gain of 10%. So 10% gain means what? Obviously it will be 110% of the cost price. Correct? Fine. So this is SP1 and this is SP2, right? So guys, the difference between these two things is what? This is 30% of cost price, right? Because SP1 is equal to 80% of the CP and SP2 is equal to 110% of the CP. And the difference between these two is 110 minus 80 will be what? 30%. So 30% of the CP, which is equal to what? Which is equal to 12, right? So 30% of the CP is equal to 12. Then 100% of the CP will be what? So guys, 3 and obviously like 3 4s are 12, right? So just ignored 1 0. So 10 4s are 14, right? So the CP of the article is ₹40. Clear guys? Fine. So these type of questions are actually very simple. You just have to follow the instructions of the question, right? And obviously you have to stick to the basics, right? What are the basics of profit and loss? What you have to think logically and what you have to learn, what you have to do. And just have to logical all the time. Alright guys. So now after that, let's move to the question number 2, right? Okay. Now everyone, the next question is, just read that question. Again, the very similar question, right? And obviously the process will be again similar to this one, fine. So just read that question guys and try to solve it. I can see some of you online. So guys, you may just try the question. अब देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है. You just try this question, fine. Okay, the question says a man sold an article at a loss of 20%. If he had sold it for ₹50 more, he would have gained 5%. Find out the cost price of the article, right? Again, a very similar question to the previous one, fine. Question is a man sold an article at a loss of 20%. If he had sold it for ₹50 more, he would have gained 10% obviously profit, fine. So this is CP. So 20% loss. So first SP is 80% of the CP, right? And second SP is
110% of the SP, right? Sorry, 110 of the CP. Difference is what? Difference is 30%, right? Oh, मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, and I'm solving the same question again, right? So no problem. 30% is equal to 12, then 100% is equal to 40. All right, guys. This question we have already solved. So let me solve another question now, right? ठीक है. So guys, ये क्वेश्चन हो गया था, आंसर 40 आया था. तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, right? This was my mistake. Now guys, please read this question. Okay, just read this question. The question says, a man sold an article at 20% loss. If he had sold it for rupees 50 more, he would have gained 5%, right? A man sold an article at 20% loss. If he had sold it for rupees 50 more, he would have gained 5%, right? So CP, this is 80% of the CP, obviously SP1, because this is 20% loss, and this is what? 5% gain. So 105% of CP, this is SP2, right? The difference between these two is 25% of CP, which is equal to what? Which is equal to 50 rupees. So 25% of CP is equal to 50 rupees, then 100% of CP will be what? Guys, this is 4 times, right? So 4 times of this will be what? 4 times of this will be 200 rupees. All right? So here, CP of the article will be rupees 200. All right? So guys, these type of questions are actually, very simple questions, and you just have to think logically, and एक कंडीशन आपकी ऐसी आ जाएगी कि आप सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. You don't need to do anything. You just have to read the question. You just have to apply your brain. That's it, right? And in examination, आपको यही करना होगा. You have to save your time, right? And obviously, आपको अपने आप को tiring भी नहीं बनाना है वहाँ पे, ठीक है? तो सिर्फ क्वेश्चंस को देखते रहिए, प्रोसेस करते रहिए और सॉल्व करते रहिए. जितने क्वेश्चंस आपके ओरली सॉल्व हो जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है? Now guys, let's move to another question. एक बार पढ़िएगा जरा next question. Just read this. Question says, a man sold his watch at 5% loss. A man sold his watch at 5% loss. If the selling price had increased by rupees 2,000, there would have been a gain of 15%. Right? Everyone, again. So 5% loss, 95%. 15% gain, 115%. This is SP1. This is SP2. What is the gain? The gain is 2,000 rupees. I mean, this is 2,000 rupees more. The difference is 2,000 rupees. So 20% of CP is equal to 2,000 rupees, right? So 20% is equal to 2,000, then 100% is equal to what, right? यही question है. So 20% is equal to 2,000, then 100% is equal to what? Right, guys? So 100% is equal to, see, this is 5 times of this, right, everyone? So 5 times of this is 10,000. All right? So the cost of the watch was 10,000 rupees. Okay? So guys, simple questions. Actually, they are simple questions, right? You just have to read the question, process the things, and solve the answer, right? Get the answer. Okay. Now, just move to next question. अब मैं question का थोड़ा सा level increase करना चाहता हूँ. ठीक है? थोड़ा सा level increase करते हैं. 1-2 questions, right? Because इसके questions ऐसे ही होते हैं. सिंपल होते हैं देखने में, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? तो इसलिए आप इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, एंड दे आर एक्चुअली वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत इजीली आप मार्क्स उठा सकते हैं वहाँ से, ठीक है? चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट? गाइस, इसको जरा अच्छे से रीड करिएगा, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑल्सो. जस्ट रीड द क्वेश्चन. अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. देखिए 25% सेल आउट करने का मतलब ये हुआ कि आप जितने का लाए थे आपने उसका 125% पे सेल आउट कर दिया, राइट? सो सपोज दैट आपका CP 100% है, तो आपका SP 125% है, राइट? दिस इज योर CP एंड दिस इज योर SP. ठीक है? इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस and sold it for rupees 10.5 less, if he had bought it at 20% less, it means अगर उसका कॉस्ट प्राइस
100% की जगह 80% होता, 20% लेस फ्रॉम 100%, राइट। सो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 80% होता, उसमें लिखा है ही वुड हैव गेन्ड 30%। तो 80 का 30% गाइस कितना होगा जरा बताइए सोच के। 80 का 30% कितना होगा? 80 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज 24%, राइट। सो 80 का 30% हो गया 24, ठीक है। अब 80% पे अगर 24% का गेन होगा, सो ही विल बी सेलिंग द आर्टिकल फॉर 104%। ओके गाइस, तो 80% पे अगर आपको 30% का गेन होगा, तो एक्चुअली आप उसको 30% ऑफ 80 विल बी 24%, सो 80 प्लस 24 विल बी 104%। तो एक्चुअली यू आर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 104% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। नाउ the difference between these two SP is 21%, and question is saying first SP, the first condition is this and second condition is this, and question is saying like between first SP and second SP there is a difference of 10.5 rupees। देखिए आपका SP1 और SP2 में डिफरेंस, मतलब SP2 is 21% less than SP1, and question is saying SP2 is 10.5 rupees less than SP1, right? So 21% of CP is equal to 10.5, right? So guys इसका रिलेशन क्या है? ये इसका हाफ है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। सो 100% कितना हो जाएगा? 100% 50 हो जाएगा, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज ₹50। गाइस द आंसर इज 50 रुपीज। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें यहाँ पे 80 आया था, अब मैं 80 में डायरेक्ट 10.5 या इसमें 10.5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि परसेंटेज से आप परसेंटेज ऐड करेंगे या परसेंटेज में परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप परसेंटेज में रुपीज़ नहीं ऐड करेंगे या परसेंटेज में रुपीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ना कि इफ़ यू हैड बॉट इट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 10.5 रुपीज़ लेस, तो 20% लेस करके आपने 80 कर दिया। अब इसमें जो है मैं 10.5 लेस करके यहाँ नहीं लिखूंगा, इसको समझिएगा। परसेंटेज में परसेंटेज की का ही प्लस माइनस आप करेंगे और रुपए में आप रुपए का प्लस माइनस करेंगे, राइट। सो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज है या ये अमाउंट है या ये क्या है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा गाइस, बिकॉज ये एक बहुत बेसिक सी एरर है जो हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, राइट। सो गाइज होप यू माइट गेटिंग इट नाउ, राइट। ये बात आपको समझ में आई है? दोज हु आर सिटिंग ऑनलाइन, आई कैन सी सम ऑफ यू। सो गाइज इफ यू गाइज आर क्लियर विद दिस, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो आई कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज क्लियर है अभी? अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ओके। सो शैल वी मूव नाउ? आई कैन सी सम ऑफ यू, निधेश राज, ऑफिशियल म्यूजिक। ओके, सो एनीवेज गाइज, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही रखूंगा, राइट। यू जस्ट हैव टू थिंक लॉजिकली, ठीक है। उसको भी थोड़ा ऐसे ही करेंगे। जरा मुझे बताइए, सोच के देखिएगा जरा, क्वेश्चन पढ़िए, इसको ठीक से पढ़िएगा। लिखा हुआ है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। Had he purchased it for ₹900 less and sold it for ₹900 less, he would have gained 5% more profit. Guys, first condition में 25% का प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड कंडीशन में 5% more profit. So 5% more profit means this time 30% profit, right? Okay, find out the CP of the article. Okay guys, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है a man sells an article at 25% profit. So this is CP. A man sells an article at 25% profit. ठीक? Now the question is saying if he had purchased it for ₹900 less. If he had purchased it for ₹900 less. So 100% minus 900. Okay? And sold it for ₹900 less. And sold it for ₹900 less. So 125 minus 900, right? So second condition में आपका ये CP हुआ, and this is your SP of condition number 2. Question is saying he would have gained 5% more profit. He would have gained 5% more. So first time the profit was 25%.
So second time the profit was 25 plus 5, which is 30%, right? So actually this quantity is 130% of this, right? SP is 130% of CP, right? So 130% of this, so obviously this is 130 divided by 100. So 130% of this is equal to this. Everybody clear? Right? 130% of this is equal to this. Clear? अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए. देखिए मैं करता हूँ. ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 1.3 लगा दीजिए. So 1.3 into 100%, this will become 130%. 1.3 into 900, so obviously it is 13 9 117, right? Okay, is equal to what? 125% minus 900, right? So guys, एक बार जरा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा. इसको मैं इधर ले आता हूँ, it will become 5%. और इसको मैं इधर ले आता हूँ, so this will become 270, right? So 5% is equal to 270. Guys, जैसे ही आप 5% देखा करें ना, आप 10% पे फोकस करिए, तुरंत डबल कर दीजिए उसका. So 10% की वैल्यू क्या हो गई? 10% की वैल्यू हो गई what? 10% की वैल्यू हो गई 540. आई एम सॉरी, डबल करेंगे जब हम इसका तो ये हो जाएगा 540. ठीक है. सो 10% इज इक्वल टू 540. देन 100% इज व्हाट? 10 टाइम्स कर दीजिए. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज 100% इज इक्वल टू 5400, 5400, right? 5400 you can say, right? So price of the article was 5400 rupees. ठीक है everyone, clear? So guys, these type of questions are coming, right? तो देखिए यही थॉट प्रोसेस है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, इसी तरह से आपको सोचना होगा, राइट? एंड इसी तरह से आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे. ठीक है. So questions are actually very simple guys, and they are very logical. You have to be logical all the time. You have to have your presence of mind. You have to be like analytical, obviously in nature. And UPSC is like just trying to check your basic aptitude, right? Question को सिर्फ सोचिए, approach करिए, right? Thought process develop करिए guys, right? कोई ज़रूरत नहीं है किसी फॉर्मूले को याद करने की किसी भी तरीके से. ठीक है. And guys, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चाहिए इस टाइप के, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बुक हम लोगों ने एक पूरी बना दी है. आप सबसे पहले तो सारे के सारे टॉपिक्स पढ़िए. जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने ना टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन कर रखा है. जैसे कि आज का आपने टॉपिक पढ़ा तो यूनिटरी मेथड में तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं. इसके पहले हम लोगों ने डिफ्रॉडिंग किया था, उसके पहले हमने एक्स स्क्वायर बाई 100 किया था, राइट? तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने पूरे सेग्रीगेट कर रखे हैं. इसके अलावा हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास असाइनमेंट, देन होम असाइनमेंट में सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं. और इसके बाद जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा, सारे के सारे PYQs भी आपको मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमने 2011 से लेके अभी तक 2022 तक के सारे क्वेश्चंस एग्रीगेट कर रखे हैं और सबका टॉपिक वाइज एग्रीगेशन कर रखा है. तो गाइज आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बुक सॉल्व करिए, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि सर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, CSAT के लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, राइट? तो मैं आपको बता दूं ये स्ट्रिक्टली बेस्ड है इसी पैटर्न पे जैसे क्वेश्चन CSAT में पूछे जा रहे हैं. ठीक है. सो गाइज चलिए ठीक है, आप इसको ले लीजिएगा. आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, और बहुत ही जल्द आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और आपके नियरेस्ट बुक स्टोर्स पे भी ये बुक अवेलेबल होगी, राइट? So guys, thank you very much. That's all for today's class. Thank you everyone, and thank you.